Good morning students, I am Amandeep Yadkar, your math teacher. Today we will discuss our next exercise 3.2 trigonometric functions. Its introduction. In our 10th class we have discussed about T ratios. If there is a triangle, right angle triangle ABC and right angle at B, then BC is perpendicular, AC is hypotenuse and AB is base. ठीक है, ਆਪਾਂ 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ T ratios ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. We can learn it by a formula. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कि sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H. देखो ये विच है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. S मीन्स sin थीटा, C मीन्स cos थीटा, T tan थीटा and P perpendicular, H hypotenuse and B base. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse and cos theta is equal to base upon hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular upon base. ठीक है, ये ਆਪਾਂ 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ T ratios. ਹਾਂਜੀ, sin theta ਦਾ ਜੋ reciprocal ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ cosecant theta, that is hypotenuse upon perpendicular, और cos theta ਦਾ reciprocal sin theta, hypotenuse upon base. tan theta ਦਾ reciprocal cot theta, base upon परपेंडिकुलर. ठीक है, ये अपना 10th क्लास ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. देखो 10th क्लास ਚ जो ਵੀ ਆਪਾਂ T ratios ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ sin ਥੀਟਾ ਬਾਰੇ cos ਥੀਟਾ ਜੋ ਵੀ ਪੜਿਆ T ratios ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਬਵ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ 180 ਆ ਗਿਆ, 360 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 480, 270 ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ there are 4 quadrants, first, second, third and fourth. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 180, 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਟੂ 270. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 270 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 360. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, all school to college. ਠੀਕ ਹੈ, all school to college ਫਸਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ add sugar to coffee. ठीक है, तो ਆਪਾਂ देखो इत्थे लिखांगे all school to college. ठीक है, कोई भी कोटेशन तुसी याद कर सकते हो. एक होर कोटेशन हुंदी है सचिन तेंदुलकर, ऑल राउंडर सचिन तेंदुलकर, है ना. जो भी कोटेशन नाल तुसी इहनूं याद रखना है याद रख सकते हो. तो आप लिखता ऑल स्कूल टू कॉलेज मीनस ऑल मीनस कि जो भी टी रेशियोज है सारियां टी रेशियोज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ पॉजिटिव. ठीक है, और स्कूल S is the symbol of sin theta and cosecant theta. जो सेकंड क्वाड्रेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ sin theta और cosecant theta ਕੀ ਹੋਏਗਾ पॉजिटिव. बाकी जो भी टी रेशियोज होਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ नेगेटिव. In the third quadrant tan and cot is positive, all others are negative. And in the fourth, cos theta and secant theta is positive, other t ratios are negative.
ठीक है। तो आपां इनू बड़ा ईजिली याद रख सकते हैं। ऑल मीनस ऑल रेशोज, टी रेशोज आर पॉजिटिव। स्कूल मीनस साइन थीटा और कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जो भी टी रेशोज होणगियां इहदे विच टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सिकेंट और नैगेटिव होणगियां, ठीक है। इन द थर्ड 2 मीनस टैन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इन द फोर्थ कॉलेज मीनस की कॉस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे की आणगियां नेगेटिव। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट, इफ देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन्हों अपन नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो जो भी अपने को हाइपोटेनस हुंदा वो इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस अपना हमेशा की हुंदा है पॉजिटिव, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। देखो तुसी अगे आपां नूं सम आणगे, फिलहाल तुसी याद रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव मीनस कि जो भी बेस होएगा, परपेंडिकुलर होएगा, हाइपोटेनस होएगा, वो क्या होएगा पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट बेस इज नेगेटिव एंड परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बेस इज नेगेटिव and perpendicular is also negative. In the fourth quadrant base is positive and perpendicular is negative. ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ठीक है। फोर्थ दे विच बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव। इनू भी आपां याद रख सकते हैं। इट्स रूल टू रिमेंबर इज दैट इफ देयर इज एक्स वाई क्वाड्रेंट, ठीक है, आपां ग्राफ दे विच भी एक्स वाई क्वाड्रेंट्स करदे हुन्ने आ। एक्स मीनस बेस एंड वाई मीनस परपेंडिकुलर, ठीक है। यू हैड स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस अबाउट द ग्राफ, अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक्स वाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुंदा उहदे विच एक्स भी पॉजिटिव हुंदा और वाई भी पॉजिटिव। इफ इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हियर वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। इफ एक्स वाई इज अ क्वाड्रेंट, एक्स शो बेस एंड y used for perpendicular, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, y ਬੇਸ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ x ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। थर्ड दे विच आपां नूं पता कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इट मीनस कि बेस भी अपना नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच आपां नूं पता कि x भी पॉजिटिव हुंदा और y अपने कोल नेगेटिव हुंदा, इट मीनस बेस इज पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। सो यू कैन ईजिली लर्न इट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ we do it by doing an example of exercise 3.2, ठीक है। in this exercise find the values of other 5 trigonometric functions if cos x is equal to -1 upon x, x lies in the third quadrant। अगर x ਆਪਾਂ ਨੂੰ third quadrant ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करदा है और cos x is equal to -1 upon 2 है। देखो हुण ਇਹ वाला सम ਆਪਾਂ इस डायग्राम ਦੀ हेल्प ਨਾਲ सॉल्व करांगे, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो ऊपर डायग्राम है वो पहला क्लीयर होना चाहिए, तो आप 3.2 ਦੇ फर्स्ट 5 सम ईजिली कर सकते हैं।
ठीक है। cos x is equal to -1/2 and x lies in the third quadrant. It means in the third quadrant base is negative and perpendicular is also negative. So cos x is equal to -1/2. We know that cos x is equal to base upon hypotenuse. Hypotenuse is always positive. So base is -1. ठीक है, बेस अपने को -1 हो गया और हाइपोटेनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 गिवन है और हमेशा पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ है. Now we will find the value of ON, that is perpendicular. We know that ON square is equal to hypotenuse square minus base square, that is plus minus √3. देखो ON अपने को प्लस माइनस √3 आ गया. ठीक है, हुन जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा. We know that in the third quadrant base is negative and perpendicular is also negative. So we are taking -√3 perpendicular ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ -√3 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है. क्लियर टू ऑल. ठीक है, हुण आप अदर रेशियोज फाइंड आउट करने टी रेशियोज मीन्स की sin x is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now fill the value of perpendicular and hypotenuse, you get -√3/2. Similarly cosecant x, secant x, tan x, cot x. ठीक है, now next in the second sum sin x is equal to 3/5. X lies in the second quadrant. Now x lies in the second quadrant. We know that in the second quadrant base is negative and perpendicular is positive. Base is negative and perpendicular is positive. Now it is given sin x is equal to 3/5 means ki perpendicular upon hypotenuse. In the second quadrant base is negative and perpendicular is positive. Base is negative and perpendicular is positive. ठीक है, perpendicular positive होएगा और base अपना negative होएगा. sin x is equal to 3/5. Now we find the value of mn means base. base find out कर लांगे तो अपने को 4 आ गया. ठीक है, mn अपने को 4 आ गया. ਹੁਣ 4 ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣਾ. ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ठीक है, base is negative in second quadrant. ठीक है, हुण अपने को हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया. ठीक है, नाउ cosecant x is equal to 5/3. cos x is equal to cos x की दे इक्वल हुंदा अपने को देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज -4 and hypotenuse is 5, 4/5. Similarly, you can find all the values of other t ratios. And third, fourth, fifth sum you will try yourself. Thanks to all.